Hello guys, this is Sonu Kumar and you are watching me on YouTube. Today we are going to discuss a new chapter called light. So let's learn something about light. First of all, what is light? I want to ask you a question that how you can see light and how you cannot see. I've asked some of the students about the light, so they just informed me, sir, we can see light by our eyes. I informed that student, if you are having light, but I take you in the dark room and I inform you that you are having eyes, you have to touch some of the items, whatever I see you in this dark room. Would you be able to touch? He informed me, sir, not possible. Actually, since it is a dark room, so I'm not able to view anything. So that's why it's not possible. So then he thought, really, if we have eyes, but if we do not get light, then also the things are not visible. Then how we can say that since due to of our eyes only we can see, light is a form of energy that helps us to see everything around us. It does not require a medium and can travel even in vacuum. Let us look some of the properties of light, such as rectilinear propagations and reflection. First of all, I would like to inform you that what are the learning objectives in this chapter. By the end of this lesson, you will be able to describe what is rectilinear propagation of light. You will be able to explain how light is reflected. You will be able to explain the formation of image by spherical mirrors. You will be able to discuss lenses and image formed by them, and you will be able to explain how a spectrum is formed. So before starting this chapter, I would like to tell you something about the light. दोस्तों सीधा सीधी कहने का मतलब ये हुआ कि what is light? Light is a form of energy. Light is a source of energy which helps us to see everything around us. अगर लाइट नहीं होगा तो हम कुछ भी नहीं देख सकते. Light is a source of energy which gives us sensation to see any object. If anybody will ask you what is the definitions of light, then you can just answer in a single line that light is a source of energy which gives us sensation to see any object. What is rectilinear propagation of light? Have you ever seen a light from a torch? How do this light travels from a torch? You will be able to see that light travels in a straight line. Observe the beam of light from the headlight of a car and notice how it travels in a straight line. You will notice that a similar thing if you look at the light that falls on a screen from a projector in a cinema hall. So now let us discuss what is rectilinear propagation of light. The property of light of traveling in a straight line is known as the rectilinear propagation of light. कहने का मतलब लाइट जो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ये जो लाइट की प्रॉपर्टी है, इसी को हम लोग रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट कहते हैं. मीन्स when you talk about the rectilinear propagation of light, then here it's simply described that the property of light of traveling in a straight line is known as rectilinear propagation of light. And you can do this traveling of a light by the various experiments and various methods also. Now we are going to discuss about reflection of light. All of you may have seen that any object is viewed because of reflection. First of all, what is the reflection of light? Have you ever seen your face in a mirror? And just suppose the hold a mirror such that the bright sunlight falls on it and the slant the mirror slightly such that a patch of light is reflected on a wall. If you move the mirror, the reflected sunlight on the wall also moves. This happens because the rays of the sunlight fall on the mirror and are bounced on the wall by the mirror. The bouncing back of light from a surface is called reflection. The bouncing back of light from a surface is called reflection. A mirror reflects almost all the light falling on it. देखो जनरल सी बात है, अगर आपके घर में मिरर होगा
जहाँ से सनलाइट आती होगी आपके घर में, बस मिरर को वहाँ पे ले जाना है। और हम लोग अक्सर करते हैं किसी को चिढ़ाने के लिए, वो सनलाइट का जो है ना वो रिफ्लेक्शन होकर के किसी के फेस के ऊपर में जाता है तो उसको दिखाई नहीं देता है। तो द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। There are two types of reflection, regular and irregular. What is regular reflection and what is irregular reflection? Reflection of light depending on the nature of reflecting surface. When the reflecting surface is smooth, well polished, the rays of light fall on it are reflected in the same direction and that is called regular reflection. कहने का मतलब अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपका स्मूथ है, आपका पॉलिश है, वहाँ पे जो लाइट फॉल होगा तो डेफिनेटली फॉल होने के बाद जब वो रिफ्लेक्टेड होगा तो वो सब के सब एक डायरेक्शन में होंगे और इसी लाइट को हम लोग क्या कहते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन। और अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस इरेगुलर होगा, रफ होगा, तो वहाँ पर अगर रेज ऑफ लाइट फॉल होंगे तो वो जो स्कैटर्ड होंगे, लाइट जो रिफ्लेक्शन होंगे वो सब के सब अलग अलग डायरेक्शन में होंगे और इसको हम लोग कहेंगे इरेगुलर या फिर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। A plane mirror is an example of regular reflections. A plane mirror, which is a thin piece of glass with a reflecting coating at the back, is an ideal reflector which can be used to study the reflection of a light in a plane mirror and a plane surface beside the mirror, the others smooth polished surfaces. Also reflect light polished floors and table tops of a new stainless steel plates or vessels and a surface of the clear steel, water and some example of surface that act like a mirror. आप लोगों ने अपने घर में देखा होगा आपकी मम्मी जब वेजल्स को वॉश करती है तो उसमें देखना अपना चेहरा दिखने लगता है। आप लोगों ने एडवर्टाइजमेंट भी देखा होगा, विम बार का जो एडवर्टाइजमेंट देता है तो उसमें देखना थाली को धोने के बाद अपना चेहरा हम लोग देख सकते हैं। क्यों देख सकते हैं? बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और अगर वही सरफेस अगर इरेगुलर रहेगा और या फिर रफ रहेगा तो उसमें हम लोगों को अपना इमेज नहीं देख पाएंगे। नाउ इफ आई टॉक अबाउट इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर, आप लोग सबके घर में मिरर होता है आज की डेट में, डेफिनेटली इसके घर में नहीं है, समझ लो कुछ ना कुछ रीजन है। द इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर, व्हाट डू यू सी व्हेन वी स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर? हैव यू एवर लुक्ड इट? Representation, how we look? This representation that we look in a mirror is called an image. Let us learn something about image and there are two types of image, virtual and real. सबसे पहले आप लोग देखते होंगे मिरर में अपना फेस देखा तो आपको अपना इमेज दिखता है, राइट? लेकिन कभी आपने सोचा ये रियल इमेज है या वर्चुअल इमेज है या इमेजिनरी इमेज है? A real image is formed by the actual intersection of reflected light rays and can be formed on a screen. For example, the pictures that are projected on the screen. अब हमेशा याद रखना, एक रियल इमेज का फॉर्मेशन जब होता है वो एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट, एक्चुअल इंटरसेक्शंस ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट रेज एंड कैन बी फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन। उसको हम स्क्रीन पे देख सकते हैं। जो आप लोग देखते होंगे अक्सर प्रोजेक्टर चलते रहते हैं स्कूल में, तो आप लोग लाइट रेज इजीली आप लोग देख सकते हो। और ये जो वर्चुअल इमेज होगा उसको आप स्क्रीन पे नहीं देख सकते हो। सो इन सिनेमा हॉल द रियल इमेज दैट वी कैन सी द रेज ऑफ द लाइट कमिंग फ्रॉम द प्रोजेक्टर and falling on the screen. Real image formed by a single mirror or lens, as we will read ahead in this chapter, are always inverted. Inverted का मतलब upside down. The real images are the path of rays which form them are represented by continuous line. सीधा सीधे आप समझिए कि जो रियल इमेज होगा वो रियल इमेज हमेशा उल्टा होता है। मतलब अगर आपका ऑब्जेक्ट सीधा डालोगे, अगर हेड ऊपर है तो उसका जो इमेज होगा वो उल्टा होगा, हेड डाउन हो जाएगा। और वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट रेज when extended behind the mirror and not be their actual intersection. Virtual image cannot be formed on a screen. ये जो वर्चुअल इमेज होते हैं उसको हम लोग स्क्रीन पे फॉर्म नहीं कर सकते। वर्चुअल इमेज आर ऑलवेज अपराइट, वो हमेशा सीधे डायरेक्शंस में होते हैं। एंड द पाथ ऑफ द रेज फॉलोइंग देम आर शोन इन द डॉटेड लाइन्स, और उनका जो डॉटेड लाइन से हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं। द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको हमें लर्न कर लेना है। द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज as far the behind the object is in front of it, the object as its image are equidistant from the mirror. कहने का मतलब अगर प्लेन मिरर में आप उससे 1 मीटर की दूरी पर है तो आपका इमेज भी 1 मीटर की दूरी अंदर में बनेगा। कहने का मतलब आपसे लेकर के 2 मीटर की दूरी पर आपका इमेज बने। 1 मीटर आप
मिरर के सामने है और 1 मीटर